Welcome student in chemistry by Viral sir, episode number 27 surface chemistry. लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था दैट प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड कैसे करना है या व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड ये डिस्कस करना है आज के एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था इमल्जन, टाइप ऑफ इमल्जन। इमल्जन इज water heterogeneous mixture and how it forms, how it stable due to use of emulsifying or stabilizing agent like a soap, lamp black, long chain fatty acid, long chain alcohol, etc. Now the question is there that this type of lyophobic salt how becomes stable, or for a long time how we can stabilize it. So for this you know that some sort of electrolyte, positive or negative ion, is necessary to present that on the surface of dispersed phase it is adsorbed, and that's why due to repulsion between dispersed phase they cannot aggregate and not in bigger size and settle down, and that's why coagulation does not take place. But sometimes what happened that electrolyte is not present, so we will add the electrolyte externally like NaCl, KCl, KBr, whatever type of strong electrolyte we have to add it. And after adding this electrolyte, sometimes what happened that the dispersed phase itself positively charged attract with the negatively charged particle of electrolyte, or dispersed phase itself negatively charged attracted towards the positive charge of electrolyte and neutralized with the charge, and in that case aggregation takes place and that bigger in size, and that due to under gravitational force it becomes settled down. सर आपने क्या बताया कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दो। तो डियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंड दैट कोई डिस्पर्स फेस ऑलरेडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है पहले से, और अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं तो क्या होगा कि उसी डिस्पर्स फेस पार्टिकल पर ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट या ट्रू सॉल्यूशन से आए हुए हैं ड्यू टू डिसोसिएशन वो एड्सॉर्ब होंगे, फिक्स लेयर फॉर्म होगा, और आपका जो डिस्पर्स फेस है वो न्यूट्रल हो जाएगा। एंड न्यूट्रल विद चार्ज दिस टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्ट टुगेदर, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, कोलैप्स होंगे। लिक्विड है तो दोनों कोलैप्स होंगे, बिगर इन साइज होंगे, और दोनों लिक्विड एक सेपरेट लेयर फॉर्म करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटाइजेशन। In that case, stability is not obtained, although we are adding this type of true electrolyte in small amount. अगर हमने डायलिसिस किया, डायलिसिस करके ट्रू इलेक्ट्रोलाइट को लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन पर लाए, फिर भी उसका कोएगुलेशन हो जाता है बिकॉज ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं। Let's start with one example and then you can understand very well. So, dear student, here you concentrate on the board. You will find that in a big container that water as dispersion medium, water taken as dispersion medium. Here you find that water droplets H2O act as dispersion medium, and some gold particles which already acquired negative charge which is present
as disperse phase, Au as negatively charged disperse phase particle present in the colloid gold salt. Now in lyophobic type colloid gold salt, gold particle acquire negative charge, and to make it stabilize, some stabilizing agent like 10% W by V NaCl aqueous solution is added. Then what happened? You will find here that this NaCl solution make a thin layer due to absorption of positive ion, and fixed layer is formed. Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, Na plus, make it a fixed layer around the gold salt, and that what happened, that due to repulsion of some positive ion, they do not make coagulation. That thing already we have studied in unit, that charge on colloidal particle in lyophobic type of salt. But then what happened? Due to ionization of NaCl, Na plus aqueous as well as Cl minus aqueous ion is also separated. This Cl minus ion are also make a layer that is called diffuse layer, or you can say that is a mobile layer or movable layer. And this minus charge attracted towards this positive charge, and it becomes neutralized. In that case, what happened? That the two gold Au gold salt, which is neutralized with the charge positive and negative ion of three electrolyte, and then they comes to nearer with each other and coagulate together and make a bigger size of particle. Similarly, this is added, this is added, this is added, and the bigger particle is formed, and it becomes settled down due to gravitational force, or under gravitational force, that a dispersed phase particle of gold becomes settled down due to aggregation takes place. तो यहां पर ये लायोफोबिक सॉल, गोल्ड का लायोफोबिक सॉल है या हाइड्रोफोबिक सॉल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लायोफिलिक सॉल ऐड करना पड़ेगा. तो लायोफिलिक सॉल आर मोस्ट ऑफ स्टेबल एज वी लर्न, जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक पे पढ़ा है, आपको बताया है, आपने लर्न भी किया है और आपने सुना है कि लायोफिलिक सॉल्ट्स आर स्टेबल इन नेचर बिकॉज इट इज a water attractant or attractive interaction takes place between dispersed phase and dispersion medium, और वो स्टिकी होते हैं लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च एक्सेट्रा. तो ये लायोफिलिक सॉल्ट अगर हम इसमें कुछ अमाउंट में ऐड करें तो व्हाट हैपन, दिस लायोफिलिक सॉल्ट मेक्स अ लेयर, thin layer around this negatively or positively charged dispersed phase, and then a coagulation, this type of coagulation does not take place, and your salt becomes stable. So stability of salt, particular lyophobic or hydrophobic type of salt, it increases with the help of addition of लायोफिलिक सॉल्ट. तो लायोफिलिक सॉल्ट ऐड करने से ये हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक सॉल्ट की स्टेबिलिटी कुछ एक्सटेंट तक
इंक्रीज होती है, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर सॉल्ट from coagulation or precipitation is called protected colloids, and this total phenomenon is known as that protection of colloids, particular in lyophobic or hydrophobic type of colloids. Okay, तो first we define, पहले हम गोल्ड नंबर क्या है वो डिफाइन करेंगे। गोल्ड नंबर डिफाइन करने के बाद गोल्ड नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक सॉल्ट वो डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज गोल्ड नंबर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड? गोल्ड नंबर, it is a number of milligram of lyophilic colloidal salt is added in 10 ml of gold salt. Gold salt is considered as lyophobic salt or hydrophobic salt to stop coagulation if 1 ml of 10% W by W concentrated NaCl solution is added. Normally we find that for protection of lyophobic salt we have to add some true solution or true electrolyte like NaCl to make it that some positive or negative charge particle is adsorbed on the surface of dispersed phase in presence of lyophobic type of salt. As for example, you will find here that in a given container H2O as dispersion medium. Here you find that H2O, that is your dispersion medium, in which that gold particles are heterogeneously distributed by very hard shaken, which is act as dispersed phase. Now what happened that when I stopped to shaken it और मैंने उसको stirring करना बंद कर दिया, then due to Brownian motion these gold particles are comes to nearer, get aggregate and bigger in size, and that becomes settle down. उसको प्रिवेंट करने के लिए, सेटल डाउन होने से रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मुझे अंदर कुछ ट्रू इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। एज फॉर एग्जांपल इसमें मैं 10% W/W concentrated NaCl solution ऐड कर रहा हूं। You will find here 10% W/W concentrated NaCl solution. That NaCl aqueous solution is dissociated in water, which is act as dispersion medium in Na plus aqueous means positive ion and Cl minus aqueous as negative ion. Now as you know very well that your gold particle are adsorbed by negative ion Cl minus, and that your salt becomes negatively charged. This negatively charged ion becomes stable up to some extent, but the higher concentration of NaCl, अगर NaCl को मैंने कुछ ज्यादा डाल दिया या कितना डालना है फॉर प्रोटेक्शन फॉर स्टेबिलिटी वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे पहले गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। Again, I will define what is gold number and what is protection of colloid. Lyophobic type of colloid, as for example, that is the gold salt. You will consider here that is your gold salt. Gold salt is lyophobic or hydrophobic type salt in which gold particles are act as dispersed phase and water as dispersion medium, which makes
heterogeneous form or suspended form. Now I want to protect it to coagulation does not form. So what is the gold number, or how I will calculate the gold number according to definition? You will find it is gold number is a number of milligram of lyophilic colloid. सपोज मैं अंदर एक लायोफिलिक कोलॉइड भी साथ में ऐड कर रहा हूं, जैसे गम और जिलेटिन और अरेबिक गम, तो ये मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा टू स्टॉप द कोएगुलेशन, बिकॉज अ स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इज ड्यू टू दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एब्सॉर्ब ऑन द गोल्ड सरफेस. लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में ऐड हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और न्यूट्रल पार्टिकल्स एग्रीगेट करके कोएगुलेशन करेंगे. तो इसके लिए नेसेसरी है दैट a number of milligram of lyophilic colloidal salt like gum, gelatin, agar-agar, etc. is added in 10 ml of gold salt. अगर गोल्ड सॉल्ट मैंने 10 ml लिया है, 10 ml के हिसाब से उसने एक डेफिनेशन बनाया है. पर 10 ml 1 ml of NaCl is required. So उसने दिया है that in 10 ml of gold salt to stop coagulation, if 1 ml, अगर मैं 1 ml NaCl का 10% W/W concentrated solution ऐड कर रहा हूं टू मेक इट स्टेबल, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं हो रहा है और कोएगुलेशन हो रहा है, तो वो कोएगुलेशन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कितना मिलीग्राम ये गम सॉल्यूशन, गम सॉल्ट दैट इज अ लायोफिलिक टाइप ऑफ सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा. वो नंबर, उस नंबर को हम गोल्ड नंबर बोलेंगे. अगेन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? कोएगुलेशन या प्रेसिपिटाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए 1 ml 10% W/W कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूं. लेकिन वो सॉल्यूशन ऐड करने के बाद भी अगर कोएगुलेशन हो रहा है तो वो कोएगुलेशन से बचाने के लिए, कोएगुलेशन को स्टॉप करने के लिए हाउ मच मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड like gum, gelatin, starch, agar-agar, this type of lyophilic colloidal salt is required in milligram, that is called gold number, and this type of lyophilic salt is called a protective colloids, and that whole phenomenon is known as protection of colloids. So dear student, you know very well what is the protection of colloids, how to protect this lyophilic colloidal salt to lyophobic colloidal salt, prevent from the coagulation due to opposite charge particles are aggregate to each other, because this lyophilic type salt make a thin layer like a film on the surface of dispersed phase particle, and that's why they do not aggregate with each other, and that's coagulation does not take place. पर ये लायोफिलिक सॉल्ट का कितना अमाउंट, कितना मिलीग्राम मास रिक्वायर्ड है, दैट calculate in which physical quantity is known as gold number. Dear student, ये gold number आपके सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है. That is specially for NEET, JEE Advanced as well as AIMS. तो आपको गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ टू कैलकुलेट द गोल्ड नंबर इन पर्टिकुलर सॉल्ट. Suppose with the example
we can try to understand that what is the gold number and how it is protect the लायोफोबिक टाइप ऑफ सॉल. गोल्ड नंबर कोई भी लायोफिलिक सॉल का क्या है और वो कैसे लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट करता है, कितने कॉन्सेंट्रेशन पर, कितने मास पर. तो एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दे आर गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ कैन यू सॉल्व विद द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर. इफ 0.25 gram starch salt added in 100 ml of gold salt, that is lyophobic type of salt, before adding 1 ml 10% W/V NaCl solution for protection of gold salt, means to stop the coagulation of gold salt, then find the gold number of starch solution. स्टार्च सॉल्यूशन का गोल्ड नंबर कितना होना चाहिए या मिनिमम स्टार्च का कितना मास अंदर प्रेजेंट होगा टू स्टॉप कोएगुलेशन, टू प्रोटेक्ट योर गोल्ड सॉल्ट. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट यू नो दैट 100 ml solution of gold acquire 1 ml of NaCl. तो number of milligram mass of protective salt, here protective salt कौन सा है, you will find that your protective salt is starch and this mass is given in gram, we will convert into milligram. Then volume of colloidal solution, total volume of colloidal solution कितना दिया है, 100 ml of gold solution or gold salt. And why we multiply 10? 10 ml is equal to 1. Then 100 ml is equal to how much? तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है गोल्ड नंबर के लिए, that you can understood how we will calculate that 0.25 gram into 10 raised to, ये ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है. Then 10 raised to 3, that is in milligram, whole divide by that total volume of colloidal salt, lyophobic salt, gold salt का वॉल्यूम है 100 ml. That gram is converted into milligram while we added or multiply with the 10 raised to power 3 into 10. Finally, you will get that 250 into 10 divided by 100, 0, 0, 0, 0 cancel, and that you will get 25. So 25 milligram per ml, gram is converted into milligram, so milligram per ml starch salt is required to protect gold salt. So that 25 is called gold number of starch. How you can calculate the gold number, that you understood very well. Dear student, according to this formula you can able to calculate that the gold number whatever the given data, अगर ये 10% W/V NaCl दिया है तो that is only the reference with 10 ml, आपको डायरेक्टली वही लगाना है that 10 ml is equal to 1 ml, then 100 ml is equal to how much करके ये फॉर्मूला मैंने बनाया है. ये फॉर्मूला से आपको इजीली गोल्ड नंबर ऑब्टेन हो जाएगा. तो दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल. कुछ इलस्ट्रेशन में आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं कि जो लायोफिलिक टाइप ऑफ सॉल है और वो लायोफोबिक सॉल में ऐड करने से उसका गोल्ड नंबर किस रेंज में मिल सकता है, मिनिमम रेंज एज वेल एज मैक्सिमम रेंज. Dear student, as you have seen on the board that some colloidal salt, lyophilic type of salt, which is called as a protective colloid or protective salt with some gold number range, minimum to maximum range is given, that you can see here that gelatin minimum gold number is 0.005
to maximum 0.01 to protect the coagulation of lyophobic type of salt like a gold, or you can consider that is gold number. Second is casein, that 0.01 to 0.02. Third, hemoglobin, that gold number 0.03, that is the minimum requirement, up to maximum 0.07 for the protection of lyophobic type of salt, that is you consider as blood, which is lyophobic type of salt to protect with the hemoglobin. 4 is egg albumin. Egg albumin you consider with the egg white. एग के अंदर व्हाइट एंड येलो 2 डिफरेंट पोर्शन होता है, उसमें जो एग व्हाइट ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है दैट यू कंसीडर एज एग एल्ब्यूमिन, उसका गोल्ड नंबर है 0.1 to 0.2. फिफ्थ इज अरेबिक गम. अरेबिक गम का गोल्ड नंबर है 0.15 to 0.25. दैट स्टार्च हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, स्टार्च का गोल्ड नंबर है 20 to 25 मैक्सिमम. अगर उससे ज्यादा है तो हम स्टार्च यूज नहीं कर सकते और कोई यूज करना पड़ेगा. देन लास्ट इज अ डेक्स्ट्रीन. डेक्स्ट्रीन इज अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड उसका नंबर है 6 to 20. तो अकॉर्डिंग टू दिस वे यू विल कंसिडर दैट द डिफरेंट रेंज ऑफ गोल्ड नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट विच इज एक्ट एज protective colloids. Dear student, one more concept I want to share with you, that is the protection power of lyophilic type of salt. That protection power, here you find that protection power of lyophilic salt inversely proportional to gold number. Means if gold number increases, that protection power decreases. In other way, you can say that higher the gold number, that protection power of particular lyophilic type of salt or protective salt decreases. Means उसका amount ज्यादा चाहिए. That you understood. स्टार्च का 25 मिलीग्राम पर ml चाहिए, लेकिन पर 100 ml के लिए हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन उसकी जगह कैसीन या जिलेटिन यूज करते तो शायद इस रेंज में आंसर आ सकता था. तो अकॉर्डिंग टू दे आर आस्किंग क्वेश्चन नीट एंड जी पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर गिवन सम गोल्ड नंबर एंड आस्क अबाउट दैट राइट द प्रोटेक्शन पावर इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर or decreasing order or ascending or descending order. As for example, let's we see. Okay, let's start this example. Some lyophilic salt given with the gold number, that salt A having 0.01 gold number, B that 2.5 and C 20, that is the gold number. According to power of protection of lyophilic salt, which is the correct order, that they are given 4 options. Suppose A, you will find that C greater than B greater than A. Second option, they are given A greater than B greater than C. C option, they are given all are equal, A is equal to B is equal to C. And last option, they are given B greater than A greater than C. Now if you can understood very well the definition, तो आपको गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कितना ml है क्या है कुछ भी नहीं दिया है. मैंने आपको सिर्फ एक यहां पर फॉर्मूला दिया था, प्रोटेक्शन पावर ऑफ कोलोइडल सॉल्ट और लायोफोबिक सॉल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गोल्ड नंबर. तो सबसे कम गोल्ड नंबर जिसका है उसका प्रोटेक्शन पावर सबसे ज्यादा है. यू विल कंसिडर दैट सबसे कम गोल्ड नंबर यू विल फाइंड फ्रॉम ए, तो उसका प्रोटेक्शन पावर सबसे ज्यादा है. तो यू विल फाइंड हियर ए का सबसे ज्यादा है. देन सेकंड बी का 2.5 है,
तो सेकंड बी, एंड सी का सबसे ज्यादा है, दैट इज द लीस्ट दैट पावर. तो योर आंसर यू विल कंसिडर एज बी according to our formula, that protection power of colloidal salt proportional to 1 upon gold number, or it is inversely proportional with gold number. So dear student, what is gold number? How that protective colloids are protect lyophobic type of salt. How to calculate the gold number? What is the role of lyophilic salt to protect the colloid from the coagulation? What is the role of true electrolyte like NaCl? How to calculate gold number? All the things is very well clear. If you have any type of doubt for the calculation or solve this type of MCQ, you can write in comment box as well as on WhatsApp. And if you like, then please give me a like, subscribe and share with your friends. Very good day.